fast moving consumer good, FMCG sector, a highly demanded sector. इस सेक्टर को कहते हैं एवरग्रीन सेक्टर. टुडे आई विल डिस्कस वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक in that particular sector. This stock already given within 5 years 1000% return. If you invested in 2020 1 lakh rupee, you will get 10 lakh within 5 years, and the maximum return was 10,000%. 1 year is a 28%. What is the name of this particular stock and what's the business? First of all, I have to give you the total business idea of that particular stock, then the fundamental discussion, and after that the details. That's all. My name is Shomo, Investor Mantra in Hindi. Today I'll discuss a very interesting stock. Please subscribe my channel to get all the information. First of all, what's the business of that particular stock? The business is Basmati rice, that is Dawat. You know the name of the Dawat, of course you know. ये सेक्टर का ये पर्टिकुलर स्टॉक बासमती राइस का, ये एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी होल वर्ल्ड में इनका है, 80 से ज़्यादा कंट्री में इनका बिजनेस सिचुएटेड है, एंड होल वर्ल्ड वाइड इसका डिमांड है. दैट पर्टिकुलर स्टॉक प्रेजेंटली यूएस से 41% बिजनेस करते हैं, इंडिया से 19%, यूरोप से 17% एंड मिडिल ईस्ट से बाकी. Now, what's the name of the company? Company name is LT Foods, one of the best company, and this company already given you 1000% return in within 5 years. Okay, now the fundamental of that particular stock, fundamental mid cap level company, that is 17,100 crores company. Return on capital employed is 19, return on equity is 17. What do you mean by the return on capital employed? What is return on equity? Okay, I will all discuss in next videos. First of all, the return on capital employed is excellent, return on equity is fantastic, debt to equity ratio is 0.33, and if you know the PE, what do you mean by the PE? Price to earning ratio. That's not the all. PE is something more than that. It's the valuation of that particular stock. Presently, the value is 28, and industry's PE, if you compare it with industry's PE, that is 20. So naturally, this is not much value. A fast moving consumer goods sector, all maximum stocks are overvalued. But that stock is not much overvalued. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर. इसके जो प्रोमोटर होल्डिंग है 50% से अबव, दैट 51% प्रोमोटर इज ऑलरेडी होल्डिंग दैट पर्टिकुलर स्टॉक, एंड FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, also holding that stock. Not only holding, is adding the stocks. Same way, DII also added that particular stock, buy that particular stocks. Whereas the retailer is selling that stock. These stocks having the future potential growth, and the fundamentals also good. Now come to the point of results. The result, one of the important point. If you compare with last year to present year, it will be a very interesting point. Last year का जो revenue growth था वो था क्या? वो था 2075 crores था last year. 2024 में अभी क्या है? 1228 crores. That means revenue increased year on year basis. Now the net profit also increased. In a net profit was 150 crores last year, present year 161 crores. That means in net profit is increased, revenue growth is increased, sales growth already given an excellent sales growth. If you see the last 5 years sales growth, it is around 26.44%. It is excellent. So ये stock future potential capability है. Business is excellent. बहुत सारे demand है. And sales promotion is excellent, sales distribution is fantastic. Those are the very good point for that particular stock. Now, first of all, the weaknesses. Yes, this is a very highly demanded stock. Whole nationwide, worldwide, this stock is presence, and sales distribution is fantastic. Sales growth is fantastic. Return on equity, capital employed, fantastic. Debt to equity ratio is fantastic. Valuation is not much. Everything is good, but this stock is depend on agricultural base. That means if इस तरह कहते हैं एग्रीकल्चरल रिस्क कहते हैं इसको, जैसे कुछ ज़्यादा बारिश हो गया है, रेनफॉल ज़्यादा हो गया है, इसीलिए प्रॉब्लम आ सकता है. इसका रॉ मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा हो जाए तो अल्टीमेटली टोटल इम्पैक्ट हो जाएगा. सो इसीलिए एग्रीकल्चरल रिस्क इज प्रेजेंट हियर. एंड द सेकेंड पॉइंट geopolitical tension. This is also another very important point. If there is type of geopolitical tension is there, if like Israel Iran जो
इसका जो टेंशन था, इसीलिए क्या हुआ, इसका जो रास्ते ब्लॉक हो गए। तो नेचुरली दिस टाइप प्रॉब्लम में अराइज, एंड फॉर दिस रीजन इसका प्राइस हाइक हो सकता है, इसका प्रॉब्लम आ सकता है। इसका यूरोप में, बेसिकली यूएसए एंड यूरोप में इसका मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, सो वहाँ पर डिसरप्शन हो जाए तो अल्टीमेटली इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है यहाँ पर। थर्ड जो है कंपटीशन, इसका कंपटीटर ह्यूज लेवल का कंपटीटर इसका, सो यू शुड हैव टू थिंक दिस पॉइंट ऑल्सो। लाइक डाबर, इसका भी इस तरह का बासमती राइस के ऊपर काम है। इफ यू थिंक अबाउट द ITC, इफ यू थिंक अबाउट द टाटा कंज्यूमर, ऑल आर द कंपटीटर। नंबर 4 FMCG ब्रांड बिल्डिंग एक्सपेंसेस कहते हैं इसको, अर्थात ऐसे है कि इसको चलाने के लिए बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट का जरूरत पड़ता है। ये इसके लिए, इसीलिए इसका एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है। तो ये नेचुरली फॉर दिस रीजन ये स्टॉक को रन करने के लिए इस तरह का प्रॉब्लम का फेस कर सकते हैं। ऑल्दो दिस कंपनी इज रियली फैंटास्टिक कंपनी, ह्यूज पोटेंशियल ग्रोथ इज ऑल्सो देयर, already given 1000% return. This is presently mid cap level company having potential to large cap. So naturally, it also having that type of capability to give you more return. And इसका जो सबसे बड़ी बात है, ये इसका डिमांड है होल वर्ल्ड वाइड। तो नेचुरली इसका अभी भी सेल्स ग्रोथ अब देखिए कितना ज़्यादा है। नेट कैश फ्लो इज पॉजिटिव, नॉट ओनली पॉजिटिव, बेसिकली 62 करोड़ पॉजिटिव है, मतलब ये नेट कैश फ्लो पॉजिटिव होना अच्छी बात है। सो नेचुरली क्या है, टोटली इफ यू सम द होल थिंग, इट्स ए अपॉर्चुनिटी, बट स्टिल यू हैव टू थिंक twice before investing, because there's also some weaknesses, some restriction, constraint also there. You should have to think about it.